देश भर के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं संजुला हल्दर, उप निदेशक प्रधान आयकर महानिदेशालय प्रशासन एवं करदाता सेवाएं के अधीनस्थ आयकर निदेशालय जनसंपर्क प्रकाशन एवं प्रचार मयूर भवन नई दिल्ली में कार्यरत हूँ। वेलकम टू अनदर सेशन फ्रॉम संवाद। संवाद श्रृंखला के भाग के रूप में आज हम आपके लिए फेसलेस अपील से संबंधित विषय पर चर्चा लाए हैं। The Income Tax Department is embarking on a revolutionary journey to simplify tax compliance, enhance transparency, expedite resolution of cases, and the Faceless Appeal Scheme stands as a significant leap in this progressive trajectory. आज हमारे साथ चर्चा के लिए श्रीमती अर्चना चौधरी मैम, प्रधान आयकर महानिदेशक प्रशासन एवं करदाता सेवाएं हैं। Ma'am is an officer of the 1987 batch of IRS with a distinguished career spanning various locations including Lucknow, Bangalore and Delhi in various verticals including TDS, appeals, investigation, assessment, training, etc. During her tenure as the Commissioner of Appeals in Bangalore, she initiated the digitization of appeals categorized by age to ensure timely resolution. As the Principal Chief Commissioner of Income Tax at the National Faceless Appeal Center, Ma'am played a pivotal role in overseeing the establishment and seamless implementation of the Faceless Appeal Scheme. Currently, Ma'am is serving as the Principal Director General of Income Tax Administration and Taxpayer Services, where her primary mission is to enhance the taxpayer experience, mitigate grievances of the taxpayers and promote voluntary tax compliance, making tax administration friendly. फेसलेस अपील से संबंधित विषय पर इस संवाद के एपिसोड के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। संवाद के इस एपिसोड में मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद संजुला। मैम सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि फेसलेस अपील स्कीम की शुरुआत और टाइमलाइंस के साथ साथ नेशनल फेसलेस अपील सेंटर NFAC की स्थापना का एक संक्षिप्त विवरण हमारे दर्शकों को प्रदान करें। Faceless taxation, implemented through faceless schemes, assessments and appeals, is one of the biggest direct tax reforms in India. ये टैक्स पेयर्स और असेसिंग ऑफिसर्स के बीच फिजिकल इंटरफेस को कम करने के लिए ई गवर्नेंस आधारित फ्लैगशिप योजना है। एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी are the key ingredients of these schemes, which seek to leverage advances in information technology, big data management, artificial intelligence, and machine learning. They aim at bringing about a transformative change in direct tax administration. National Faceless Appeal Center, NFAC, has been set up under the Faceless Appeal Scheme to facilitate the conduct of e-appeal proceedings in a centralized manner, including random and automatic allocation of appeals to a specific appeal. धन्यवाद मैम। मैम टैक्स पेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स के बीच एक प्रचलित चिंता फेसलेस शब्द की व्यावहारिक व्याख्या से है। Does it mean, ma'am, that the departmental officer and the taxpayer and the appellant, they don't get to see each other? And also, there are certain complex arguments which cannot be understood through written submissions alone and require some sort of across-the-table interaction. So, if you could explain that to us, ma'am. नॉर्मली फेसलेस शब्द का अर्थ है कि संबंधित अधिकारी की पहचान अर्थात असेसमेंट के मामले में असेसिंग ऑफिसर या अपील के मामले में एडजुडिकेटिंग CIT अपील्स छिपे हुए हैं। पहचान न केवल करदाता या अपीलकर्ता से बल्कि आयकर विभाग सहित अन्य सभी छिपी हुई हैं। द आइडेंटिटी इज नोन ओनली टू द सिस्टम which has randomly allocated the case initially. The officer, of course, knows the details of the taxpayer. CIT अपील द्वारा जारी किए गए सभी नोटिस या अन्य पत्राचार सिस्टम पर अपील करता और एप्लेंट को CIT अपील की पहचान के बिना लेकिन एक डिजिटल सिग्नेचर के साथ सूचित किए जाते हैं।
इसी तरह जब अपीलकर्ता इन नोटिसों का जवाब देता है तो उसकी सबमिशंस बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के सिस्टम पर संबंधित सीआईटी अपील तक पहुंच जाती है. इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स, submission to the CIT appeals is made through written submissions for the purpose of adjudication. In case the appellant wants to explain something orally, he may ask for a personal hearing through video conference, and the CIT appeals has to mandatorily grant the request. We can discuss the video conferencing in detail later in the session. Thank you, ma'am. Ma'am, could you please explain to our viewers how a taxpayer files an appeal under the new scheme? Because earlier the taxpayer had to find out the CIT appeals who had jurisdiction over their case and then file the appeal in their office. So how is the new scheme different now, ma'am? The new scheme has done away with the concept of jurisdiction of CIT appeals. Once appeals are filed, they are allocated by the system to any of the 280 plus CIT appeals in the country. This mechanism is random, jurisdictionless, and automatic, and is controlled by the logic of the system. अपील दाखिल करने के लिए करदाता को आयकर विभाग की वेबसाइट के साथ साइन अप करना होता है, जो incometax.gov.in है. करदाता का वहाँ रजिस्टर्ड अकाउंट होना चाहिए. ई फाइलिंग पोर्टल में साइन इन करने के लिए उसे फाइलिंग ऑफ फॉर्म 35 पर नेविगेट करना होगा, आवश्यक डिटेल्स भरना होगा, संबंधित डॉक्यूमेंट्स और सबमिशंस अटैच करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा. Once submitted, the system takes over and allocates the appeal. It needs to be mentioned here that as soon as the appeal is allocated, a communications window opens up between the appellant and the CIT appeals. This means that if the appellant wants to make a submission, he doesn't have to wait for the initial notice from the CIT appeals and can make it straight away. Thank you, ma'am. मैम, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पर्सनल हियरिंग के बारे में बताया है. मैम, could you please tell us if there is a limit on the number of personal hearings that an appellant can ask for? पहले की योजना के तहत अपीलकर्ता appellant वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से पर्सनल हियरिंग रिक्वेस्ट कर सकता था, लेकिन उस अनुरोध की अनुमति चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के डिस्क्रिशन पर थी. Keeping in view the principles of natural justice, the new scheme amended these provisions and the grant of request was made mandatory on part of the CIT appeals. न तो आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट और न ही योजना स्कीम ने पर्सनल हियरिंग की संख्या पर कोई सीमा लगाई है, लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि अपीलकर्ता एप्लेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पर्सनल हियरिंग की मांग करने में विवेकपूर्ण होंगे. मैम, हमारे दर्शकों को ये विस्तार से समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद. मैम, द डिपार्टमेंट इज रिसीविंग सम कंप्लेंट्स फ्रॉम द टैक्स पेयर्स दैट देयर अपील्स आर नॉट गेटिंग डिस्पोज्ड ऑफ एंड द एडजुडिकेशन प्रोसेस हैज़ बिकम स्लो. मैम, ये सारी शिकायतें आ रही हैं टैक्स पेयर्स से कि उनकी बहुत वर्षों से अपील्स डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है. So ma'am, could you please tell us if National Faceless Appeal Center has taken any measures regarding this? The CBDT and the NFAC are both seized of the matter, and it has been our constant endeavor from the very start to stabilize and streamline and make seamless the processes and functionalities ताकि disposal तेज और सुगम हो सके. It would be appreciated that it took time to address the teething troubles both at the procedural as well at the systemic level. NFAC, being the interface in the framework of the scheme, it has been unwaveringly addressing the procedural and systemic issues. परिणाम स्वरूप हाल के दिनों में अपीलों के डिस्पोजल में तेजी आई है. More than 2 lakh appeals have been disposed since inception of Faceless Appeal Scheme. In financial year 22-23, more than 1 lakh appeals have been disposed and more than 30,000 appeals have been disposed since April 2023 till date. धन्यवाद मैम.
Ma'am, is there any procedure by which a taxpayer can request for early hearing or disposal of their matter? And ma'am, if you could please enlighten us about the qualifying conditions associated with that. As per the Income Tax Act, it is prescribed that appeals may be heard and decided within a period of 1 year from the end of the financial year in which the appeal is filed, but with the caveat wherever it is possible. इसलिए अपीलों के निपटान के लिए कोई निश्चित समय सीमा या समय बाध्य तिथि नहीं है. However, under the following circumstances specified by the CBDT, the appellant may file an application with the jurisdictional principal CIT requesting for an early disposal of its case. The details: cases with demand above 1 crore, cases where refund is originally claimed in the ITR is in excess of rupees 1 lakh, cases where direction to this effect has been issued by courts, cases where requests have been made by senior, super senior citizens, any other case of genuine hardship. Subsequently, based on the recommendation of the jurisdictional principal CIT, the appeal may be considered by the principal CC NFAC for early disposal, and the same is communicated to the concerned Faceless CIT appeals through the priority channel of communication for disposal of appeal on priority basis. धन्यवाद मैम. मैम, आपने प्रायोरिटी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का उल्लेख किया है. क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं मैम कि ये प्रायोरिटी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? The priority channel of communication is an intra-departmental hotline of communication in the Faceless ecosystem to flag something urgent to the concerned Faceless CIT appeals without unmasking his identity. अर्ली हियरिंग रिक्वेस्ट के अलावा रिट मामलों पर अदालत के आदेशों को प्रायोरिटी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का उपयोग करते हुए अनुपालन के लिए CIT अपील्स को भी अवगत कराया जाता है. धन्यवाद मैम. मैम, टैक्स पेयर के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए कोई डेडिकेटेड सिस्टम है, इसके बारे में अगर आप हमें कुछ बता सके. हाँ, करदाता डेडिकेटेड मेल बॉक्स में samadhan.faceless.appeal@incometax.gov.in और CP ग्राम्स के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है. These are the apparatus aimed at improving taxpayer services in alignment with the Citizens Charter. The grievances received on Samadhan are promptly addressed by NFAC and action taken upon the grievance is communicated to the appellant. Where the action has to be taken by the appellant, on the e-filing portal, the NFAC educates the appellant about the steps, procedure in the reply mail. इसी तरह CP ग्राम्स पर हम बहुत तेज़ी से कार्यवाही करते हैं और निर्धारित समय के भीतर इसका डिस्पोजल करते हैं. Thank you, ma'am. Moving forward, I'd like to ask you, ma'am, what are the categories of cases which are excluded from the jurisdiction of faceless appeals? इन मामलों को बाहर रखा गया है. अपील which involve search and seizure and appeals where the PAN is lying in central international taxation charges does not come under the ambit of faceless appeal ecosystem. Any other case where a judicial authority has directed the transfer of the appeal to CIT appeals outside the faceless scheme. Thank you, ma'am. Ma'am, what is the procedure regarding transfer in or transfer out of appeals? The transfer of appeal is initiated at the request of either the CIT appeals or the appellant himself. अपीलकर्ता ईमेल आईडीज के माध्यम से या प्रिंसिपल CCIT NFAC को संबोधित पत्र के माध्यम से ऐसा अनुरोध कर सकता है. samadhan.faceless.appeal@incometax.gov.in. Any email of any officer posted in NFAC. मैम, अपील का जुरिस्डिक्शन क्या है जो इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफ़र प्राइसिंग एडजस्टमेंट के मामलों से संबंधित है और उन्हें ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर क्या है? Firstly, it is pertinent to emphasize here that a mere reference to the transfer pricing officer would not result in jurisdiction of the NFAC over the appeal. There must be one or more grounds of appeal
pertaining to transfer pricing adjustments to ensure transfer of the appeal out of the faceless appeals ecosystem. Secondly, the list of appeals involving matters pertaining to international taxation and transfer pricing adjustments are communicated to the Office of the Principal CCIT International Taxation for mapping the jurisdiction of the CIT appeals over these appeals. Consequently, NFAC यह सुनिश्चित करता है कि अपील को फेसलेस अपील इकोसिस्टम के बाहर जुरिस्डिक्शनल CIT अपील्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाए. Ma'am, is there any mechanism in the e-filing portal which allows the appellant to mention the correct jurisdiction at the appeal filing stage itself? अभी तक अपीलकर्ता के पास ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है. But the NFAC is actively considering the proposal to recommend the necessary changes in e-filing software to enable the appellant himself to mark the relevant jurisdictional CIT appeals if the appeal falls outside the faceless appeals ecosystem. Thank you for explaining that, ma'am. Ma'am, what is the procedure for rectification of the apparent mistakes in the orders which are issued by the National Faceless Appeal Center? The appellant can file a rectification petition through the e-filing portal directly. The jurisdictional assessing officer, that is JAO, can also file a rectification petition against the order of CIT appeals. The rectification application is then allocated to a faceless CIT appeals through automated allocation by the system. Thank you, ma'am. Ma'am, what is the procedure to deal with an appeal in case the judicial authority set aside the case to CIT appeal for fresh adjudication? In these cases, the JAO or the custodian CIT appeals can create the set-aside pendency and it will then be allocated to a faceless CIT appeals in an automated manner by the system. धन्यवाद मैम. मैम, नेशनल फेसलेस अपील स्कीम में NFAC द्वारा टैक्स पेयर को क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं? अगर आप इसका विस्तार से हमारे दर्शकों को समझा सकें. जैसे कि मैंने पहले उल्लेख किया है, NFAC की भूमिका ओवरऑल स्कीम को लागू करने के लिए है, जिसमें करदाता, अपीलकर्ता और फेसलेस CIT अपील्स के बीच सभी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक रूप से होते हैं. However, because of the transition of tax administration from the physical to the digital mode, multiple difficulties have been faced by taxpayers, which are in the nature of hearing of appeal, difficulty in filing appeal, difficulty in making submissions, etc. Taxpayers have reached out to NFAC with their grievances. NFAC has been resolving the issues with the available resources. Moreover, NFAC has always been proactive in smoothening the appellate process by way of bringing in new system-based functionalities, modification of existing functionalities, suggesting legislative amendments, etc. धन्यवाद मैम. हमारे दर्शकों को फेसलेस अपील से संबंधित सभी मामलों के बारे में धैर्यपूर्वक समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हमें उम्मीद है कि इस सेशन से आपको वो सभी आवश्यक जानकारी मिली होगी. We hope this session gave you the necessary insights into issues pertaining to faceless appeals, facilities available to the appellants under Faceless Appeal Scheme, priority channel of communication and so much more. संवाद के इस एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Do follow us on our social media handles on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter and keep watching for updates on more educational and informative content. Until the next time from Samvad, thank you and Jai Hind.